Hello everyone, I am Dr. Raj Maham. So today we are having a session on job analysis. Unfortunately, कुछ connectivity हमारी Shahan की तरफ से कुछ connectivity issues हैं. So I'll take the lead today. So आज हम job analysis को हम थोड़ा सा discuss कर लेते हैं. Job analysis का human resource management का एक बहुत ही important और major function है. And so today we are having Omar Sheikh. He has 19 years in the field of HR with multinationals, manufacturing and service industries in Pakistan. Currently, he is associated with Falcon Eye Private Limited as head HR, admin and legal. ये इनका designation है. Sir, हम आज today we will discuss कि जॉब एनालिसिस जो ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर और प्रायर फंक्शन है, इसकी इम्पोर्टेंस को भी और ये होता क्या है इसको डिस्कस करेंगे. सो अगर आप कुछ थोड़ा सा इनिशिएट करना चाहें, जॉब एनालिसिस क्या है, व्हाट इज जॉब एनालिसिस एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट एंड इसका जो है बेसिक इसका आइडिया कॉन्सेप्ट और इसका जो मेन थीम है वो क्या है, अगर आप थोड़ा सा हमें गाइड करें इस बारे में. Thank you, ma'am, for taking me on board. I really regrets that Shahan wasn't able to make it today. Let's start with the job analysis. Before any company advertises any job, the prerequisites are to be that everything should be aligned and the right candidate is to be recruited for the position. But what are the prerequisites that are to be done before the ad is being placed? You need to have the education, which is minimum required, the skill set that you're looking for, the age, gender that you're looking for. So these basic things are the prerequisites in order to give any job related advertisement or position vacancy. That is for that, obviously, for the job descriptions, the job analysis, there are particularly 4 to 5 different aspects that you look into. So it is essentially required that before before any recruitment ad that is being placed, the prerequisites are clearly defined. In order to obtain those clear pictures or the prerequisites, you need to have the job analysis done. So this is the background for the job analysis. And if we go further, so there are basically 6 to 7 methods of job descriptions, job analysis that are being performed in the market generally. Number first might be the objective, the observations. Number second can be the interviews methods that are being done into the organizations for that. Number third, you may take the questionnaire format. Number fourth, you can take the checklist format. Then there are prerequisites for the prior incident that took place. If you take them one by one, so if you talk about the observation method, so the observation method is basically like you are observing the individual who performing that task or job personally or through the supervisor. So it is generally being adopted into a majority of the firms that silently a person is being observed that how he or she performs their jobs. So, but this type of the observation method is mostly used into where you can quantify the jobs as far as in a large organization, a production unit is concerned, or there are certain packages and printings are concerned, that a person is doing that number of jobs into that. So quantifiable jobs or people doing quantifiable jobs are mostly observed through this method. The people using their mind or most skillful tasks that are sitting mostly into the back offices are mostly not, this method is not appropriate for them. So if we talk about the second point that we have, that is the interviewing method. So in order to obtain whatever the job analysis that you're doing, the person
a one-to-one session with the concerned person is being done. So in order to grab the gravity of of the job, for example, if you talk about just a small gatekeeper of your organization, in terms of management or in the prospect of various people looking at a gatekeeper might be like he only opens up a gate and closes the gate while somebody is coming and going out. If you're absorbed, if you are having an interview with that person, that might there might be certain more points that you must have missed at that time. For example, greeting might be one of the key factors that the person might be doing while opening up a door and smiling and greeting somebody. So that must be one of his prerequisite of the job that he's performing. It's not an easy thing to smile for 14 hours or 12 hours a day while opening up a door and greeting somebody. And in majority of the firms or wherever you go or you park your vehicle any place, if the person does not greet you properly, तो आप यही कहते हैं कि बहुत बदतमीज आदमी. Or Hmm. majority in companies, if somebody complains that a guest comes into the company and is not greeted well, so that is also taken as as a very bad thing. So every person, let it be the person who's working in the smallest or the junior most role or into the organization, or working at a strategic level or on the top-notch position in the organization, every person have their own credibilities and every person have their own positions where they will be the best judge of that situation. Okay, So sir, interviewing skill, yeah, sorry, sir. please. Question that most of us think every job is suitable for us. That's all due to unemployment. I think हम लोग ये है कि job analysis is basically it's a process of identifying and determining the duties, responsibilities, and specification of a given job. अब since हमें ऐसा लगता है कि हर job हमारे लिए बनी है, अब हम जो है बिकॉज सिंस जैसे इन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो हम इसको कैसे यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि फॉर एग्जाम्पल अगर डेटा एडमिनिस्ट्रेशन या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की अगर एक जॉब है, तो हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल. क्योंकि सिंस हम लोग तो वी आर बाइस्ड ऑन ऑन आवर पार्ट, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग जो है ठीक है जी, हमने हमारे पास है स्किल, हम क्वालिफाइड हैं और हमें ये जॉब क्यों नहीं मिला. अब हमारे पास 10 तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे होते हैं कि हम क्वालिफाइड भी थे, हमारे पास ये पर्टिकुलर स्किल्स भी हैं, तो ये व्हाई इट हैपेंस कि हमें अक्सर जॉब जो है हमें आंसर आ जाता है कि भाई हमने वी हायर्ड अ बेटर पर्सन, या हम आपको नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी हम आपको देंगे. तो ऐसा क्यों होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वी आर द बेस्ट सुटेबल वन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, बट ऑर्गेनाइजेशन हमें हायर नहीं करती. तो ये क्या है, व्हाई इट इज. It is a fact. But if we talk about structured organizations, where we can take banks, multinational firms working in Pakistan, obviously there are prerequisites and proper job analysis, proper job evaluations, everything's are in black and white. For example, if the person is overqualified or underqualified for that position, if you're looking for a HR business partner, you need a person that has been partnering into various roles. If there's a position for the complement side, because HR has evolved in Pakistan like anything. First, there used to be only one HR person that used to look after various functions of HRs. Now you've got people who are masters of their own faith, and plus they have their professional degrees into the respective genre that they want to go in. For example, if we talk about HR, the HR and analytics is a different forte. The Comben Ben is total a different forte. HR operations come into a very, very diversified field nowadays as well. So recruitment, selection, training and development, learning and development is a separate forte into many organizations. There are separate teams who just work for the betterment of the people into the organization. So that is a separate skill set of people who are into learning and development and who have been there, doing there. Plus, if you've got different a group of companies working with you, there are people who look after the shared services into HR. So this is the segmentation of HR nowadays.
So if you, I'm giving you a brief scenario for a structured organization at this point. Unfortunately, the non-structured organizations, you can call them the safety organizations or sole proprietors companies, or people having a private limited firm run by the family-owned businesses. These issues are there because the proper job evaluations, proper job analysis, the job descriptions are not made properly. They don't know whom are to be hired and where to be hired. Placing the right candidate in the right place is the key to success, basically, in terms of Sir, HR when it is. yes, you're absolutely right कि हम since multinational international companies उनके जो job analysis processes हैं वो बहुत ही detailed हैं और they use the right kind of tool and technique and method to collect the data to develop the description and specification. तो हमारे जैसे छोटी जो organization है सर they उनको tools and techniques का इतना पता नहीं है. What they do is they take the information from internet. That is कुछ websites हैं जैसे jobdescription.com है, onet model है, onet online एक website है, उससे हम लोग अपना information ले लेते हैं और थोड़ा अपना जजमेंट के बेसिस पे हम डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन को हम डिजाइन कर लेते हैं. तो आई थिंक हमारी पाकिस्तान में हमें थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चीजें वेरी कर रही हैं. अब आपकी रिक्वायरमेंट कुछ हो सकती है डिफरेंट हो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली हम डिजाइन करते हैं स्पेसिफिकेशन. और वो वी कैन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट या हम जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायनामिक्स को देख लेते हैं. बट सर्टनली हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है वो हमने सबसे पहले देखना है. तो सर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी जो स्पेसिफिकेशन है या डिस्क्रिप्शन है वो हम सही तरह से बनाते नहीं है, तो फिर बेसिकली इट्स मेनली यूज्ड फॉर हायरिंग पर्पसेस, तो वी एंड अप हायरिंग रॉन्ग पर्सन. अच्छा सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जैसे सिंस हम लोग जो स्पेसिफिकेशन बनाते हैं तो वी डिजाइन फॉर ट्रेन पीपल एज वेल एज वी डिजाइन फॉर द अनट्रेन पीपल. तो जो अनट्रेन पीपल है, ट्रेन पीपल के तुम जो समझ आ गई है कि लेंथ ऑफ द प्रीवियस जॉब की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, क्या ट्रेनिंग्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं उनकी. अच्छा अब when we are designing the specification for untrained personnel, तो हम उसको कैसे, क्या है उसका, क्या आप थोड़ा सा हमें अगर थोड़ा हमें बता दें कि उसको हम कैसे लेके चलेंगे. देखिए, if you talk about the untrained people, obviously there are supervisors who are available, and if you give the faith into that person's hand, उसके ऊपर उसको एक तो सेल्फ अपनी एक एस्टीम जो होती है उसकी भी एम्पावरमेंट नजर आती है कि the management is believing into that candidate. So until and unless you hear them out, that is one of the major issues that is happening in Pakistan. हम अगर अप्रेजल्स की भी बात करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि हमसे तो पूछा नहीं क्या, हमें तो बताया नहीं क्या, बस अप्रेजल होके आ गया. एटलीस्ट यू हैव टू हियर दैट कैंडिडेट आउट. इफ यू टॉकिंग अबाउट, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जिसके अंदर एक आदमी रिपीटेड जॉब पे जॉब किए जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको कितने टाइम से एक ही प्रोसेस से वो गुजरता है और कितने काम करता है. सेम जॉब एनालिसिस के अंदर हमारे पास एक लेमैन एटीट्यूड आता है जिसके अंदर हम लॉग बुक मेंटेनेंस और डायरीज की बात करते हैं. सो दिस टूल इज मोर इफेक्टिव टुवर्ड दोज पीपल जो के थोड़े से नॉन एजुकेटेड है या एक ही काम रिगरसली एवरी डे कर रहे हैं. उनके ऊपर ये एक्सरसाइजेस की जाती हैं कि जो एचआर डिपार्टमेंट में कंसर्न लोग इस जॉब एनालिसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. What they try to do is that you have to document whatever the process you do the entire day. You have to write it down. अब इसके अंदर भी दो प्रॉब्लम है कि हर प्रोसेस के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. अब अगर आपके साथ ये डिस्कशन हो that you have to write every process down, and if you are doing by the end of the day, you might skip something, and if you are doing by every minute और आपके साथ आपकी मशीनरीज ऑन है, तो देयर इज अ चांस कि आप अपना कोई प्रोसेस का पॉइंट मिस कर दें और आप इस प्रोसेस में लग जाएं कि आफ्टर एवरी सेकंड यू आर राइटिंग समथिंग डाउन. सो इट हैज टू बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द पर्सनल हु वाज इन्वॉल्वड इनटू इट अलोंग विद द सुपरवाइजर. आप उस बंदे के अंदर अपना फेथ पुट इन करें, उसके साथ टाइम लगाएं, उसको जज करें उसकी जॉब्स के ऊपर कि एवरी डे
उसको कितना टाइम फ्रेम लग रहा है इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन जॉब, That's प्लस right. उसका पूरे दिन का पैटर्न क्या है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन टिल द एंड ऑफ द लाइन, वो कितने प्रोसेसेस से वो गुजरता है। हमारे लिए तो कहना बहुत आसान होता है ना कि आप पैकेजिंग वाला कर क्या रहा है, कि एक पैकिंग में पैक हो रहा है और निकल रहा है। हो सकता है कि वो एक रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इसमें क्यूसीज वाले आते हैं, या अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से हटके आप जनरल ऑफिस मैनेजमेंट की बात करते हैं, सो यू गॉट janitorial staff. Janitorial staff has got a pattern of job that they have to perform every day. So Hmm. अगर वो अपना काम ना करें तो आपके ऑफिस की क्या कंडीशंस हो जाए। लेकिन दे आर लेसर इनटू in terms of recruitment that is to be done. Plus, you make them work round the clock, and you make them work for other jobs as well, which does not pertain to them. Yet you again ask them कि ये काम वक्त पे क्यों नहीं हुआ. So the headcount management is also essential. सर जब हम वी आर डिजाइनिंग स्पेसिफिकेशन फॉर अनट्रेन्ड पर्सनल्स तो वी कैन ऑलवेज चेक कि हम उनकी सेंसरी स्किल्स क्या हैं, लर्निंग एबिलिटीज हैं कि नहीं हैं, उनकी जो है उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है। थोड़ा सा हम उनकी पर्सनैलिटी को अगर हम जान लें या हम उनको पर्सनैलिटी रिलेटेड कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन तैयार करें तो आई थिंक हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर देखिए सिंस हम लोग इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। मैं आज ही एक रिसर्च देख रही थी, आई थिंक अफ्रीकन रिसर्च 2019 की, इट्स वेरी लेटेस्ट। उसमें था कि यंग पीपल दे आर मोर इनोवेटिव, दे क्रिएटिव एंड दे अडेप्टेबल। आपके ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूसिव, अगर आपने हर इंडिविजुअल को जो है वो स्किल हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, फिर वो क्रिएटिविटी कहीं आप लैक कर जाते हैं। जो यूथ है या यंग पीपल हैं, दे टू मेंटेन द एनर्जी इन द ऑर्गेनाइजेशन वी हायर यंग पीपल एंड वी बिलीव दैट वी आर गुड इनफ टू ट्रेन देम। तो आई थिंक वो हमने जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन करनी है। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वी कैन ऑलवेज हायर यंग पीपल, क्योंकि सर एक प्रॉब्लम जैसे सिंस यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन और यू वेल नॉलेजेबल, हमारे हाँ एक ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है जो कि मैंने थोड़ा सा फील किया है कि एक इंडिविजुअल है हैविंग मे बी 20 ईयर एक्सपीरियंस और स्किल्स भी हैं, एजुकेशन भी है, नॉलेज भी है, बट स्टिल सर उनके एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपनी नीड क्रिएट कर ली ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाट दे डू इज दे डोंट रेडी टू ट्रेन अदर पीपल, क्योंकि उनको ये होता है कि हमारी वर्थ कम हो जाएगी। फिर उनका एक नॉन सीरियस एटीट्यूड शुरू हो जाता है, बिकॉज उनके टैंट्रम शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे नो दैट दे आर द बेस्ट और उनके जैसा कोई है नहीं। तो सर आई थिंक ये भी एक एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होने का, डू यू थिंक इट्स अ प्रॉब्लम कि हम फिर हमें टैंट्रम्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं एक ऐसे इंडिविजुअल के जो नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है और उनका मतलब वो अपनी नीड चूंकि क्रिएट कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फिर हमें जो भी है हमें उनको टॉलरेट करना है। और अब फॉर एग्जाम्पल एक ईमेल आया है, आपने 2 दिन तक जवाब नहीं दिया, बट उसका आपके स्किल नथिंग टू डू विद योर स्किल्स एंड एजुकेशन एंड अब ये तो एटीट्यूड प्रॉब्लम हुआ ना। तो सर ऐसे प्रॉब्लम्स हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई करें हायरिंग पे कि हमें पता चले कि अगला क्या एटीट्यूड प्रॉब्लम है या अगले के कोई बिहेवियरल इश्यूज हैं। तो ये सर थोड़ा सा अगर आप इस पे। देखिए ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, लेकिन the best part is the world is changing. Pakistan is also changing in a positive direction. If you talk about, we started our career in 2003 and 4, you can say. That was one of the first jobs that I did. So at that time, it was considered that the CEO is gonna be of 55 plus years. The chairman of the group is gonna be 60 plus years. It's gonna be the directors, the GMs are gonna be for 50, 60, late 50s. Now the trend is changing. You've, you've, you will see a lot of young CEOs, a lot of young CEOs, COOs, President group of Canada, directors, chairman. Brampton. Yeah, I'm talking about in Pakistan as well. I'm talking Yes. about the heads, the general managers, the HODs of the respected organizations. You can find now people in their late 30s till their early 50s. So the trend is Yes. changing.
It's no Yes. longer that कि आपने एक senior और एक aged आदमी या एक reputable, obviously but the repute and respect comes along, no doubt about it. Every senior person who is, let it be from his or her experience or with the passage of the time or the age bracket, is irrespectable, and the given respect has to be given to the person, obviously. That is what our religion and our upbringing teaches us. So respect Yes. level shall be kept according to the sanity, but the trend is changing. You can see a lot of young bankers heading branches. Before 20 years, 15 years back, only those people who were very into their late 50s or aged people used to run branches. That was the prerequisite कि बाल सफेद होंगे तो आप हेड बन सकते हैं. अब वो नहीं है. Yes. Now your skill Exactly. set, now your skill set, your education, your experience always gives you an edge over anybody. So And I if you would, see yeah. the And plus, business I've seen people, I've seen organizations that who are going through a transformation phase in Pakistan, and they've got all young blood coming in yes. on crucial and key positions like that. You talk about Yes. teleco, the head of businesses mostly are into their very nice age brackets, that is from late 30s till the early 50s. These are the current leaders of the organizations. You talk about people who are, you are one of those people who are young PhDs and taking lectures into the top-notch universities. पहले तो professors साहब or teachers used to be in their very high ages. But if you talk about your own industry, that you are into the education field at this point, so a transformation is everywhere, Yes. nowadays. So, but Sir, हमारे as you said questions that हमारे that this dilemma exists, there are certain हम्म, people who do not want to let go of their position. The lust for हम्म, power and position will never be over yes. in this world. सर जितने भी द all over the world जितने भी business gurus हैं, if you see Jeff Bezos, Bill Gates, they were young when they were like मतलब कि जब they were like leading their organization, जैसे इनकी कोई आप देखेंगे कि जैसे मार्क ज़ुरिक, they all are young people, और आई थिंक उनकी क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी और उनमें ज्यादा होती है एक जो है एक एज के बाद जाके आप में वो सब चेंज वैसे ही आपको पसंद नहीं होता, आपको होता है जैसे चीजें चल रही हैं बस चलती रहे, सिंस वी हैव टू मीट द चेंजिंग एनवायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन है, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो एवरी 15 मिनट्स आई गेस द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, इनोवेशन है, नोवेल्टी आ रही है, तो आई थिंक हमें अडेप्टिव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर हम नहीं होंगे तो हम रुक जाएंगे, हमारी ग्रोथ रुक सकती है, हम डिक्लाइन पे चले जाएंगे. सो आई थिंक हमें इंक्लूसिव, जैसे हमने कहा, डाइवर्सिटी को देखना चाहिए, और स्किल्स और एजुकेशन एक्सपीरियंस तो इट्स वन थिंग, आई एम श्योर इसका कोई नेमल बदल नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमें नए लोगों को अब सिंसियर जो हमारी एजुकेशन में शिफ्ट आएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज जस्ट अ क्लिक अवे, अब हम आइडियाज बेचेंगे बेसिकली. सर हम Definitely. हाँ, हमें टेबल सिखा रहे हैं बच्चों को, व्हाट इज द यूज, आई डोंट गेट इट. आप मतलब वी हैव कैलकुलेटर्स, वी हैव लैपटॉप्स, अब हमारी जो एजुकेशन में शिफ्ट आएगा, अब हम आइडियाज बेचेंगे कि किसके पास बेटर आइडिया है. तो अब जो है ना, चीजें जिस तरह से चेंज हो, उस तरह से हमें उनको अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें जो है वो उनको अडेप्ट करना पड़ेगा चीजों को. तो आई थिंक हम Okay, थोड़ा सा adaptability and reluctant to change, obviously. Gigi, people are reluctant to change. There is no two opinion into it. Basically, if you talk about the learning aspect of the entire of anybody's, the key essence to success is learning. If you think yes, that if you are at the age of 50, or if you are in your 40s, if you are in your 30s, that you've done your masters, you've done one or two short courses or any aggregated courses that are internationally acceptable, you think, yeah, मैंने बहुत कर लिया, but that is it. No, that is yes, not it. Number yes, second, number first, if you think that you are a guru and you know each and every single thing into this entire world, that
the way that your learning will be stopped, and hardly your career progression will also be stuck, or you'll become redundant like anything. One should be open to ideas. If the new blood is coming in, you need to exchange your ideas with them. You should learn from them whatever the new things are into the market, what are the new trends into the universities, which type of education that are being given nowadays. That a bookish knowledge is a bookish knowledge, a practical knowledge is a practical knowledge. For example, if you are teaching people into the universities through proper case studies, case-based scenario, physical workshops, training, seminars, discussions. That is something that you are producing people, and you are just polishing them out to be ready for the market. If you are just asking them what is the definition of this, obviously the definitions and is one of the prerequisites. You should know what your course or curriculum is, but uh, that should not be one of those things which you should be judged upon right now. Exactly. I will share an example with you. Around 5 to 6 years back, I went to a very big organization for an interview for position of head. There was one of the directors who was sitting in his office, and there was one other, his assistant was also with them, and he was continuously asking some questions related to the definition of certain things. So, for example, what is an MBO? What is this? What was Maslow's hierarchy? Hmm. These were the things that obviously we taught around 10 to 15 years back. We are Hmm. not uh, practical definitions of certain things will not make me work. Obviously, that was a degree. My grip should be upon that, but my physical and my professional skills are what which needs to be brightened up or sharpened up. So these are the things which should be cascaded down. You should learn from the new blood that is coming in. You should teach them from your experience, because there's no shortcut to experience, to be really honest. You should teach them from your experience. You should learn from them whatever the new things are there into the market. सर जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसे आप कुछ एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता आप चलने की प्रैक्टिस करवाते हैं बाय द टाइम एक महीना दो महीने में ही और शी स्टार्ट वॉकिंग ऑन देमसेल्व्स मतलब कि थोड़ा सा अगर आप कोई जो सीनियर लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें दैट दे ट्रेन द जूनियर वंस तो आई थिंक हमने जो ये कोलैबोरेशन हेल्पिंग कल्चर बनाना है आई थिंक हमारे पाकिस्तान में नहीं है बिकॉज सिंस हमारे पाकिस्तान में भी बॉस कल्चर चलता है लीडरशिप का आई थिंक अभी ट्रेंड आने में जरा टाइम लगेगा कि अब लीडर इज लाइक जिसने अपने नीचे 10 लीडर्स को बनाना है तो हम लोग वी आर मोर बॉसेस देन अ लीडर क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि वो हम कहते हैं वी आर द बेस्ट हम अपना नॉलेज भी नहीं दे रहे और हम उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे और हम तो आई थिंक हमें थोड़ा सा लीडरशिप की तरफ अब आना चाहिए सिंस हमारी टीम में हम 10 लीडर्स और पैदा करके जाएं तो आई थिंक ये जो कोलैबोरेशन है हेल्पिंग कल्चर है एक दूसरे के साथ आप रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस वेलबींग वाला जो एक है आई थिंक अब हमें उसकी तरफ थोड़ा सा हमें देखना चाहिए हमारा जो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, और इसमें मैं एक चीज ऐड इन करना चाहूंगा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ना, वो एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है इसके। अनटिल एंड अनलेस आप स्पून फीड करते रहेंगे और आप अपनी पावर्स अपने पास रखेंगे, क्योंकि आप अपनी जो है वो यू आर रिलक्टेंट टू चेंज, प्लस यू हैव इनसिक्योरिटीज दैट द न्यू ब्लड इज कमिंग इन। फॉर एग्जांपल, मार्केट में अगर आप एक मिड साइज यूनिवर्सिटी के ग्रेड हैं और आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के हैं, या फॉर एग्जांपल इज देयर अ पीएचडी student that is under you, or if they are gold medalist coming from the top notch university, तो आपको ये प्रॉब्लम होता है ये मुझे खा जाएगा या ये पोजीशन ले लेगा। तो उस पे लोग जो है एडमेंट होते हैं, they do not cascade down whatever their experience or their position or their authority is to the down the line. The It should be done. It should be done. Until and unless you will not cascade down your authorities, you will not delegate your authorities to your managers or to people reporting to you, they will not held themselves responsible. Plus, they will not stand on their own feet as well. So that is one thing that I 100% believe in.
and whatever the organization that I have worked with. So there is no boss culture, and I'm really blessed that there's the organization that I'm currently working in. There is no SAP culture in our company as well. So even the junior most person calls the head with their names. There's no culture like SAP, Jana, boss, and something like that. So everybody is on one page. So that is a sense of security that you give somebody else, that I am not from a royal family. I am also somebody who is coming from a mediocre family background, having completed my education and started from a junior level, and now I'm sitting on this position. So this is my success of life and my journey that I traveled upon. So I would love to see my team grow the same way. So the succession planning has to be done accordingly. Somebody should be replacing me in 5 years or 3 years or 2 years, and the person who is reporting to that person, he should be replacing that person. There should be a clear career path into the jobs for everybody. Yes, yes. Yes, sir. Thank you, sir. Umar, you have given such important information and valuable insight. जॉब एनालिसिस के बारे में काफ़ी आपने हमें इंफॉर्मेशन दी है. आई थिंक अगर ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप इनबॉक्स में ड्रॉप कर दें. हम इंशाल्लाह विल आंसर देम. सो सर, हाँ, तो हमने आज जॉब एनालिसिस को बेसिकली डिस्कस किया और उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसके प्रॉब्लम, उसके साथ जो एसोसिएटेड हैं, हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया. अगर आप समझते हैं या यू थिंक ऑडियंस में कोई ज़्यादा आपको क्लैरिफिकेशन किसी भी चीज़ के बारे में चाहिए रिलेटेड टू जॉब एनालिसिस, तो आप यू कैन ऑलवेज आस्क, वी कैन रिस्पॉन्ड. हम रिस्पॉन्स कर देंगे आपके आंसर कर देंगे हम. So thank you so much, Sir Umar. It was a pleasure having you. Same here. Same here. The pleasure is mine as well. Thank you so much. So today's session is over. So Allah Hafiz. Take care. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Thank you.